So, welcome back, guys, with another question of linear algebra. So, देखते हैं आज क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों के प्लेट में. So, first of all, इधर में नोटिस कीजिए that this is a linear transformation from R3 to R3, okay? And इधर में ट्रांसफॉर्मेशन विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस दिया हुआ है. अच्छा, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मतलब ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इधर में दिया हुआ है. What is that? It is written as 0, 0, 1, 0, 1, 0, and 1, 0, 0. So it is like this: standard basis 2, standard basis 3, standard basis 1, standard basis 2, standard basis 3. Basically, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में क्या होता है, इधर में जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या समझाता है, if I'm sending this standard basis E1 from R3 to another place in R3, then इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, सपोज इसमें मैं 1, 2, 3 को मैं कोई और एक जगह भेज दे रहा हूँ, इधर 4, 7, 8. सो ये जो कोऑर्डिनेट्स में मैं भेज रहा हूँ, दिस इन we have to write this in linear combination of standard basis. Okay, we have to write this in linear combination of standard basis. यही काम करना पड़ता है हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के टाइम. ओके, सो E1 को हम लोग जहां भेज रहे हैं, if we are supposedly sending E1 to some other address, हम लोग कोई एक एड्रेस में E1 को भेज दे रहे हैं, सो वो एड्रेस in terms of E1, E2, E3 कैसा दिखेगा? It will be like 0, 0, 1. Or for example, I can say E1 is sent to some address which can be written as 0 times E1 plus 0 times E2 plus 1 time E3. Okay, this is how it can be written, which is basically E3. Okay, so E1 is sent to E3. ये आप लोगों को समझ आ ही गया होगा. So similarly, I can say that E2 is sent to E2 only, and E3 is sent to E1. Okay, from the transformation. ये हो गया फर्स्ट एक पॉइंट. सो इधर में एक चीज दिया हुआ है, मैप्स. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैप्स द सबस्पेस स्पैन्ड बाय E1 एंड E2 इनटू इटसेल्फ. ये कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि E1 इज सेंट टू E3, E2 ना E2 में भेजा जा रहा है, पर E1 is sent to E3, and so this one is not possible. The first option is out. Okay, now इधर में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. सो वी हैव टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स. ओके, सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स इज 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Okay, this is the matrix. Let this matrix be A. So the characteristic polynomial or the characteristic equation of this matrix, इस matrix का characteristic equation कैसा होगा? क्योंकि after all to find eigenvalues we need characteristic equation. यही तो हम लोग का utmost important है. So इसका characteristic equation कैसा दिखेगा? So the characteristic equation in terms of x can be written as x cube minus x square minus x plus 1. Okay, this can be written like this. So हम लोग अगर इस चीज को फैक्टर आउट करेंगे, this will be x minus 1 then minus x minus 1. Okay, so this will look like x square minus 1 and x minus 1. Or
we can say that the characteristic equation looks like x minus 1, x plus 1, x minus 1, एंड हेंस इसको अगर जब हम लोग इक्वल्स टू जीरो कर देंगे हमें मिल जाएगा आइगन वैल्यूज। इसका आइगन वैल्यूज तब हमारे पास क्या मिल रहा है, मुझे आइगन वैल्यूज क्या मिल जाएगा, आइगन वैल्यूज इसका होगा 1 एंड माइनस 1 एंड 1। ओके, ये हो जा रहा है मेरा आइगन वैल्यूज बेसिकली। सो इसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है, नो थ्री डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, दो आइगन वैल्यू इसका सेम है, दैट इज 1 एंड 1। ओके, सो ये एक पोर्शन मुझे इधर में मिल गया। ओके, सो हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, नो। ओके, अच्छा, हैज आइगन वेक्टर्स दैट स्पैन R3, हैज आइगन वेक्टर्स दैट स्पैन R3, इसका जो आइगन वेक्टर्स होगा वो क्या R3 को स्पैन करेगा। सो फॉर दैट टू फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यू 1। ओके, तो ये कैसा दिखने में होगा, a minus I, तो a minus I will look like minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, minus 1। ओके, सो ये हो रहा है e माइनस आई, इस चीज का मैट्रिक्स। अगर हम लोगों को अभी निकालना पड़ेगा आइगन वेक्टर, कोई भी आर्बिटरी आइगन वेक्टर, कोई भी आर्बिटरी आइगन वेक्टर कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, x1, x2, x3, कोई भी आर्बिटरी आइगन वेक्टर ऐसे दिखने में होगा। और हम लोग जब इस मैट्रिक्स के साथ ये आर्बिटरी आइगन वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, we will get nothing but 0, 0 and 0। okay, we'll get this one। so firstly, तो let's multiply। तो फर्स्ट में क्या मिल रहा है हम लोग को, we are getting minus of x1 plus x3 equals to 0। सेकंड में तो x2 0 हो जा रहा है, नथिंग। थर्ड में x1 minus x3 equals to 0। And from this two equation, we are getting that x1 is equals to x3। ओके, ये पोर्शन हमें मिल गया, x1 equals to x3। सो कोई भी आर्बिटरी आइगन वेक्टर जो होगा, that is x1, x2, x3, this will actually look like, we can say x1, x2, x1, which we can write as x1 1, 0, 1 plus x2 0, 1, 0, ऐसे हम लोग लिख पाएंगे। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख पाएंगे, so we can understand that we are writing this as a combination of two linearly independent eigenvector। ठीक है, एंड सो ये हम लोग लिख पा रहे हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ओके, इधर से और इधर से we can get it that we are writing it as a combination of two linearly independent eigenvectors। Hence we have two linearly independent eigenvectors corresponding to eigenvalue 1। ओके, और ये जब हमें मिल जा रहा है कि वन आइगन वैल्यू 1 में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, so from this we can understand that
we have one eigenvector corresponding to the eigenvalue -1। ये भी हम लोगों को इधर से हम लोग को इन्फर हो जा रहा है, ठीक है, इधर से हम लोग ये चीज को इन्फर कर ले रहे पा रहे हैं, ठीक है। एंड henceforth we can see that we have three linearly independent eigenvectors। ओके, सो इधर से हम लोग इन्फर कर पा रहे हैं कि वी हैव थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। इधर से हम लोग को थ्री लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जा रहा है, एंड हेंस वी कैन से दैट दिस आइगन वेक्टर्स, हेंस दिस आइगन वेक्टर्स spans whole of R3। ओके, सो हमारे पास तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, एंड ये तीन आइगन वेक्टर्स ऑब्वियसली फुल R3 को स्पैन कर देंगे। देखो, एक आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू कैन नॉट बी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंट आइगन वैल्यू, ये कभी हो नहीं सकता। तो इधर में जो आइगन वेक्टर्स हम लोग को मिल रहेगा, वो कभी भी इस जो आइगन वैल्यू है -1 उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं हो पाएगा। तो इधर में जो दो आइगन वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं, इट कैन नेवर बी eigenvector corresponding to the eigenvalue -1 because they belong to the eigenvalue of 1। और हर आइगन वैल्यू के पास एक आइगन वेक्टर होता ही है। eigenvalue is nothing without a eigenvector। So -1 के पास भी एक आइगन वेक्टर होगा। सो हमारे पास तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए हैं, और ये तीन आइगन वेक्टर्स मिलके पूरा R3 स्पैन कर देंगे। ओके, सो लेट मी shrink this page a little bit। So has a eigenvector that span R3। मैं पहले से इसको टिक करके रखा था, पता नहीं क्यों, जस्ट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, पर यस, ये हो जाएगा। ओके, this is a correct option। So has an eigenvector that span R3। ओके, एंड ऑब्वियसली इसका जो और एक था ऑप्शन डी वाला पार्ट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इट डज नॉट हैव अ non-zero null space। ओके, इट डज नॉट हैव अ non-zero null space। इसी क्वेश्चन से हम लोग को पता चल जा रहा है दैट इट डज नॉट हैव अ non-zero null space। तो ये भी incorrect है। So from this question we are getting all this part। I hope this is clear to you। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था पर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। So until the next time we'll meet again with another beautiful question। Bye bye।